ओके गाइस, आज हम क्लास 10th इंग्लिश में प्रोज पढ़ेंगे और प्रोज का ये चैप्टर है द गंगा। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। ये बुक में जैसे पीडीएफ में दिया हुआ है वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे और हम आपको मीनिंग भी बताते जाएंगे वैसे वैसे। तो पहला पॉइंट है अबाउट द ऑथर। Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was the true builder of modern India. He was also a well known writer. His famous books are Discovery of India, Glimpses of the World History, and Autobiography. He was a man of international repute. So basically इसमें ऑथर के बारे में बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर भी थे। उनकी कुछ किताबें हैं जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी। और विश्व स्तर पर उनका बहुत सम्मान होता था। वो मतलब उनको बहुत सम्मान मिलता था लोगों से, जो वैश्विक नेता थे उनसे। तो अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. He is also grateful to his colleagues who were his fellow partners. Nehru wants that his body should be cremated after his death. He wishes that a handful of ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields. So basically इसमें है कि चैप्टर में क्या लिखा गया है और हम देख सकते हैं कि जो गंगा है ये इनकी वसीयत विल, जो टेस्टमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसका एक हिस्सा है। उससे उठाया गया है कि वो उन्होंने लिखा है अपनी वसीयत में कि मेरी जब मृत्यु हो जाए, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरी जब मृत्यु हो जाए तो जो अस्थियां होंगी, जो राख होगी, उसके साथ क्या करें। उन्होंने कहा कि अस्थियों का कुछ हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और जो बाकी बचा हिस्सा हो, ज़्यादातर हिस्से को देश की धरती पर बिखेर दिया जाए। तो अभी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर जो है वो थोड़ा लंबा है, ये 5 पार्ट्स में है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ये पूरा इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इंग्लिश वाले पार्ट के साथ साथ हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उस हिंदी एक्सप्लेनेशन की कॉपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग आई कैन डू टू रीपे even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measures that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. ये हो गया पहला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि जब आप ये चैप्टर, ये वीडियो देख रहे हों तो आप साथ में ये पीडीएफ खोल कर रखें ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और आप सुनकर आपको पता चले कि ओके ठीक है हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और फिर आपको हिंदी की एक्सप्लेनेशन भी समझने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared triumph and sorrows which inevitably accompany them. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed in a manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. तो हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। My desire to have a handful of my ashes thrown in Ganga at Allahabad has no religious significance.
So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and Yamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have watched their varying moods as the seasons changed, and have often thought of history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. The Ganga, especially, is a river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet the same Ganga. She reminds me of the snow covered peaks and deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and the rich, vast plains below, where my life and work have been cast. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow, and graceful stream in winter, and a vast, roaring thing in the monsoon, broad bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into present and flowing on the great ocean of the future. And though I have discarded much of the past tradition and custom and am anxious that India should rid itself of all shackles that bind and constrain her and divide her people, and suppressed vast numbers of them, and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek in all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. I am proud of this great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I, too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. The chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. And as witness of this desire of mine, as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad, to be carried to the great ocean that washes India's shores. The major portion of my ashes should, however, be disposed of otherwise. I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from the height over the fields where peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. सो ये चैप्टर कंक्लूड हो गया. अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे विथ द हिंदी एक्सप्लेनेशन.